بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, today we are going to discuss the exercise of chapter number 4. So the first question, as usual in our exercise, is the fill in the blanks. So the first blank is, in eukaryotic cell, chromatin material is bounded by. तो न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल उसमें भी डिस्कस किया था कि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है, इट इज बाउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर? सो इट इज बाउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Blank number 2, a group of ribosomes attached to messenger RNA is known as. तो ये राइबोसोम वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ही मैसेंजर आरएनए के स्ट्रेच के साथ अगर एक ग्रुप अटैच हो राइबोसोम्स का, सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम. क्लियर? सो द आंसर इज पॉलीसोम. Blank number 3, dash is the place on chromosomes where spindle fibers are attached during cell division. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक में जो स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर लिखी गई है, that centromere is the place in the chromosomes where the spindle fibers will get attached during cell division. Clear? Blank number 4, it says the endoplasmic reticulum with attached ribosomes is known as. तो डियर स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स पढ़ी थी, और उनके ये दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स दे वर रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द पार्ट व्हिच इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So the answer of our blank is rough endoplasmic reticulum. Blank number 5, it says the soluble part of the cytoplasm is called. So dear students, बहुत अच्छे से समझाया था आपको. The soluble part of the cytoplasm is called cytosol, which is further composed of sol and gel. Clear? So the answer is cytosol. Now question number 2, write whether the statement is true or false and write the correct statement if it is false. So कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसको हमने जांचना है, उसको हमने पढ़ के जो है एनालाइज करना है कि क्या वो ट्रू है तो उसके सामने ट्रू लिखेंगे, और अगर वो फॉल्स है तो उसके सामने फॉल्स लिखने के बाद हम उसको उसकी करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखेंगे. क्लियर? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मच ट्रू. तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. द सेकंड स्टेटमेंट, इट सेज chloroplast and mitochondria do not have hereditary material. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपसे जिक्र किया था कि 3 ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना जो है वो डीएनए यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल उनके पास मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है. नंबर 1 इज द न्यूक्लियस, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, एंड नंबर 3 द क्लोरोप्लास्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा? दैट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दे डू हैव the hereditary material. Now, the statement number 3, it says centriole is involved in cell secretions. So this statement is also false because the centrioles, they are involved in cell division, not cell secretion. Cell secretion से related हमने organelle पढ़ा था, that was Golgi apparatus. Okay? So according to this statement, the correct statement will be centriole is involved in the cell division. Now, statement number 4, it says, sometimes many ribosomes get attached to same stretch of messenger RNA, forming a structure called the cytosome. Now, dear students, this is false statement. अभी हमने ब्लैंक्स में भी इसको डिस्कस किया था कि एक ही सिंगल स्ट्रेच ऑफ मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच हो तो उसको हम पॉलीसोम कहते हैं. क्लियर? सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी sometimes many ribosomes get attached to the same stretch of messenger RNA, forming a structure called the polysome. Clear? Now, the last statement of question number 2 is mitochondria are very important organelles of the eukaryotic cells. So it is true because they are the powerhouse of the cell. They are providing energy in the form of ATP. Clear? So it is true statement. Now, question number 3. Each question has 4 options and circle the correct answer. So these are multiple choice questions. The first multiple choice question is, which statement about the nuclear envelope is not true? तो nuclear envelope ये double nuclear membrane होती है जो कि in the eukaryotes उसके chromatin
मटेरियल के बाहर यानी कि जेनेटिक मटेरियल के बाहर मौजूद होती है, तो उसमें उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें से हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू. सो ऑप्शन अल्फा सेज इट हैज स्पोर्स. Yes, dear students, it is true. The nuclear membrane has spores. Option beta says it is a double membrane structure. It is also true. तो हमने कौन सी ढूंढनी है जो ट्रू नहीं है? Option Charlie says its inner membrane bear ribosomes. So that is not true. Clear? इसकी inner membrane पे ribosomes नहीं होते. RNA and some proteins pass through it. It is true. So only option which is not true is Charlie option. Now MCQ number 2, it says which statement about plastids is true? तो प्लास्टिड्स के हवाले से ट्रू स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है. दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. नो डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन. ऑप्शन बीटा सेज दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. नो डियर स्टूडेंट्स, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट द प्लास्टिड्स. इट इज नॉट ट्रू. ऑप्शन चार्ली सेज दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. नो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट करेक्ट because the chloroplast and the chromoplast means the plastids, they are only present in the plant cells. We are left only with the last option, that is delta option. They contain DNA and ribosomes. Yes, yes, it is true. हमने बात की थी कि इनके पास अपना DNA भी होता है और अपना ribosomes भी होते हैं. Now, the third MCQ, it states which type of cell would probably be the most appropriate to study the lysosomes. तो lysosomes हमने पढ़ा था, इनके अंदर phagocytic activity होती है. They are showing phagocytosis, so and pinocytosis. So उनमें से जब हम उसको स्टडी करना चाहें तो कौन से सेल्स जो हैं उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे? सो अल्फा ऑप्शन इज phagocytic white blood cells. Yes, dear students, जो white blood cells like neutrophils, like the monocytes, they have got the phagocytic activity in our body. So alpha option is correct for this MCQ. Nerve cell, mesophyll cell and muscle cell. So उनके अंदर phagocytic activity ये perform as such जो है वो mainly they are not involved. So the correct option for the third MCQ is alpha. That is phagocytic white blood cell. Now the fourth MCQ, it states which of the following pairs of structure function is mismatched. नीचे चार हमें जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बताया गया है, उसमें से हमने ढूंढनी वो है जो कि मिसमैच्ड है. So alpha option is ribosomes, protein synthesis. So it is true. Ribosomes, they are involved in protein synthesis. Option beta says nucleolus, ribosome production. Yes, it is also true because nucleolus, it is the factory of ribosomes. हमने mismatched को ढूंढना है. Option Charlie says Golgi and muscle contraction. So this is inappropriate. This is not true because Golgi is related with cell secretions. Clear? So this option is not. This pair is mismatched. The answer to this statement is Charlie. Now the last MCQ, it says which of the following statements about ribosomes is correct? तो राइबोसोम्स के हवाले से हमने वो स्टेटमेंट देखने जो कि सही है चार ऑप्शंस में से. द फर्स्ट इज अल्फा ऑप्शन सेज दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम फ्री राइबोसोम्स. सो डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स तो चाहे वो फ्री हों चाहे वो अटैच फॉर्म में हों, दे आर राइबोसोम्स, सो देयर स्ट्रक्चर ऑलवेज रिमेन्स द सेम. ऑप्शन बीटा सेज दे आर एनक्लोज्ड इन देयर ओन मेम्ब्रेन. सो दिस इज not true because they are the only organelle which is devoid of any kind of membrane. They are membrane-less organelle. Clear? So it is also not true. Option Charlie says they are concentrated in the cisternal space of rough endoplasmic reticulum. So dear students, this is also not true क्योंकि space के अंदर नहीं होते ये, ठीक है, cisternal space में नहीं होते. So we are left with only last option, that is delta option. It says they are attached to the cisternal surface. So it is true because जो cisternal membrane होती है, जो surface होती है, उसी के साथ ये attach होते हैं in the rough endoplasmic reticulum. Now question number 4, short questions. The first question is describe various movements involved in the transport of materials across the cell membrane. तो हमने वो movements का जिक्र करना है, वो processes का जिक्र करना है जो कि cell membrane में होती हैं, मतलब कि transport of materials में. तो students आपको याद होगा passive movements and active movements, और passive movement में diffusion and facilitated diffusion and osmosis. Clear? So endocytosis. So these are the movements which are involved. Now question number 2, it states state various structural modifications in a cell involved in secretions. तो हमने structural modifications बतानी है secretion, cell secretions के हवाले से जो कि एक सेल के अंदर होती हैं. तो आपको याद होगा कि the code comes in the form of messenger RNA from the nucleus. It passes through the nuclear pores and enters into the endoplasmic reticulum. वहाँ पर endoplasmic reticulum उसको synthesize करेगा, decode करेगा, translate करेगा into protein. Then it is projected and transported towards the Golgi apparatus where it is packed in a membrane, and then as per the need of the
cell, it is transported inside, within the cell or outside to the cell. Question number 3. List the processes blocked by mitochondrial failure in a cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल अगर वो खराब हो जाए, उसका फेलियर हो जाए, तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि रुक जाएंगे सेल के अंदर. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के वो 3 स्टेप्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, मींस द कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट इनटू द एसिटाइल कोए, दैट इज ऑक्सीडेशन. नंबर 2, that is Krebs cycle. Number 3, the electron transport chain. And number 4, the active transport. क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी चाहिए. अगर माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो गया, अगर वो काम नहीं कर रहा, तो एटीपी नहीं बनेगी, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल स्टॉप. तो ये 4 प्रोसेसेस यूजुअली ब्लॉक हो जाएंगे. Krebs cycle, electron transport chain, and the fatty acid metabolism and the active transport. Now question number 4, what will happen if a chromosome loses its centromere? अगर कोई क्रोमोसोम अपना सेंट्रोमियर ही लूज कर जाए तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि सेंट्रोमियर वो लोकेशन है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो डियर स्टूडेंट्स, जब सेंट्रोमियर ही नहीं होगा, सो द स्पिंडल फाइबर्स विल फेल टू अटैच टू द chromosome and it will lead to the unequal distribution of chromosomes. Question number 5. How does autophagy help in converting a tadpole larva into an adult amphibian? तो आपको याद है कि tadpole लार्वा जो होता है उसकी एक दुम होती है और वो पानी में रहता है और वो गिल्स के जरिए रेस्पायर करता है, जबकि एडल्ट फ्रॉग जो हम देखते हैं उसकी टेल नहीं होती है. तो ये कैसे रिमूव होती है? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लाइसोसोम्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. सो मेटामॉर्फोसिस इसको कहते हैं और मेटामॉर्फोसिस के जरिए जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, उसकी टेल को डाइजेस्ट कर देंगे और इट इज कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फ्रॉग. एंड क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, इट सेज इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल? तो हमने सेल वॉल को डिटेल से डिस्कस किया, तो आपको क्या लगता है कि कोई है सिमिलरिटी इन दोनों के दरमियान में? सो ऑब्वियसली देयर इज नो सिमिलरिटी एट ऑल, बिकॉज bacterial cell wall, it is made up of peptidoglycan, while the plant cell wall, it is made up of cellulose, hemicellulose and lignin and biotin. आपको याद होगा सारी चीजें. तो एक तो कंपोजिशन का डिफरेंस. दूसरा, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसमें जो परमेबिलिटी है वो वेरिएबल है. मुख्तलिफ बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स मुख्तलिफ तरीके से वो परमेबिलिटी शो करती हैं, जैसे आगे चलकर हम इसको डिस्कस भी करेंगे बैक्टीरिया वाले चैप्टर में. जबकि प्लांट सेल, इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स.